Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. फीवर 104 एफएम आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं। स्तुतीज बुक क्लब में स्वागत है आपका। अब आपको पता है कि स्तुति होती है और किताब तो होती है ऑफ द वीक, एंड इस किताब को लिखने वाले basically those who have birthed this book. So today the book that I'm holding up is the Ayurvedic Kitchen, Ancient Wisdom to Balance Body, Mind and Soul, published by Westland. और जिन्होंने इसे लिखा वो इस वक्त मेरे साथ हैं. So I have Dr. Asghar and Dr. Sonal Chowdhary with me. Thank you so much. Thank you for having us. तो बड़े दिनों बाद हम स्तुतीज बुक क्लब में एक नहीं दो ऑथर्स से बात करेंगे. और आयुर्वेदा इतना वास्ट सब्जेक्ट है, it makes sense to actually have more than one person here to give us share their wisdom with us. तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर असगर जो है यहाँ पे वो टीचर हैं Dr. Sonal ke. So Dr. Asghar is the founder director of Greens Ayurveda, and Dr. Sonal studied there. She's also a certified Ayurvedic nutrition consultant and medical yoga therapist. So very excited to be speaking about this book. So are we. Yeah. और एक और एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने डॉक्टर सोनल को दे दी है कि वो इंटरप्रेटर का भी काम करेंगी, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ और केरला में डॉक्टर असगर है और हिंदी जहाँ तक नहीं पहुँचेगी रेस्ट डॉक्टर सुपर. तो सबसे पहले शुरू करते हैं. I mean, of course, I want everyone to get their copy and go through it. It's something we all need in our lives. धीरे धीरे हम इस चीज का महत्व समझ रहे हैं कि आयुर्वेदा की जगह हमारे लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है. But considering we are in the middle of a pandemic, we've understood the importance of health and wellness and well-being and to keep sickness at bay. और हम लकी हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जो आयुर्वेदिक विजडम है वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स से हम तक पहुंच जाती है. बट ये किताब जो आप दोनों ने लिखी है, पहले आप मुझे बताइए कि क्यों आइडिया आया, कि आपको लगा कि इसकी एक आवश्यकता है. अभी जैसे आपने कहा कि आयुर्वेदा हमारे ऑलरेडी डेली फूड हैबिट्स में है ही, फ्रॉम आवर दादी नानी एंड ऑल ऑफ देम. So, and ये पेंडेमिक में हमें और इसके बारे में हेल्थ को लेके और कॉन्शियस किया कि मतलब अवेयरनेस क्रिएट हुआ. लेकिन बहुत कंफ्यूजन है लोगों को अभी भी. अब जैसे सपोज काढ़ा है तो लोग ओवरडू करते हैं चीजें, इतना काढ़ा पीते कि दे एंड अप मतलब उनको फिर स्टमक इश्यूज हो जाते हैं, कर जाते हैं कुछ और काफी और प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं. तो हमें लगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को अवेयरनेस हो कि उनके लिए बेस्ट क्या है, और खाली एक फैड को नहीं फॉलो करे कि मतलब ठीक है ये है तो ये बहुत अच्छा है. सबके लिए सब कुछ अच्छा नहीं होता. आयुर्वेदा यही है कि इट्स वेरी इंडिविजुअलाइज्ड. वो हर इंसान के लिए एक अलग मतलब उसके प्रकृति के हिसाब से, उसके दोषा के हिसाब से बताती है कि आपको कैसा लाइफस्टाइल, आपका कैसा फूड हैबिट होना चाहिए. Dr. Asghar, coming to you, I think what she said made a lot of sense, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन की हम सबको आदत होती है. हम तो केमिस्ट को ही गुरु समझते हैं, खुद ही कर लेते हैं. तो अगर हमें अब आयुर्वेदा का कुछ पता चला है कि हल्दी लेनी है, काढ़ा पीना है, तो वही चल रहा है. We don't know when to stop, and we don't get the knowledge from the right source. So what would you say regarding this? Actually, I am very thankful to Sonal, because Sonal is the real inspiration to make this book a reality. And as you know, this is what I can say, this is a bridge between the ancient time and the modern era, because lot of Sanskrit Vedas books are there, but it is not up to the layman's level. Yeah. And the modern people, you people have a lot of going behind fast food and this and that, and everything is at fingertip away, so you can get any food within short time by online buying like that. So the thing is, people are getting more lazy and they don't want to explore, or they don't want to experience it. So this is the real time during the pandemic. Everyone knows that more than wealth, health is very important. Yeah. And immunity is very important. In Ayurveda, a lot of homemade recipes, combinations, and lot of informations are there. But it is not practical, unfortunately, by Indians. Even though it is our mother science, we don't practice that much. But now the government is giving lot of support to promote Ayurveda and yoga, and as well the pandemic is also take a U-turn to back to ancient medicine, ancient system of medicine, Ayurveda.
So what we are doing is, myself and Sonal is doing is, simplify the principles of Ayurveda in a layman's language. Right. So it's easy to grasp, and they can make a step and go through the hidden knowledge and practice to their daily life. Through that, they will get a very good health, immunity, preventive, promotive. That is very important. Thank you. बहुत बढ़िया. You know, I was going through the contents of the book. So of course, you know, you've tackled fasting and sleep and sugar, and there are lots of very nice recipes that I see here to make food which is more nutritious and more healthy. तो कुछ aspects मैं उठाऊंगी. Obviously हम पूरी किताब तो cover नहीं कर पाएंगे. Plus जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम फिल्म की पूरी स्टोरी अगर बता दें तो कौन पिक्चर देखने जाएगा. तो हम पूरी चीज जो बुक में लिखी है वो तो हम नहीं बताना चाहते. But I'm going to start with something that so many people ask, wonder, get confused about, is that a lot of us are hooked to tea and coffee. सुबह उठ के चाय पीनी है, शाम को चाय नहीं पी तो सर में दर्द हो जाती है, या कॉफी नहीं पिया तो लगता है कि एनर्जी किक नहीं है. आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? So first Dr. Sonal, and then we'll come to Dr. Asghar. So basically टी कॉफी क्या है? एक स्टिमुलेंट ही है. You know, so इस बुक में हमने काफी सारे आपका दोशा के हिसाब से टीज दिया है कि अगर आप वाता हो तो इस टाइप के आप कॉम्बिनेशन. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ये जो हम लोग जो टी एंड कॉफी का जो सुबह उठते ही जो लेते हैं ना, वो बहुत गलत हैबिट है एक्चुअली. वो मतलब डाइजेशन को स्टिमुलेट कर, मतलब वो प्रॉपर डाइजेशन का जो अग्नि जिसको बोलते हैं हम लोग डाइजेस्टिव फायर, उसको हैम्पर करता है वो. तो फर्स्ट थिंग कभी भी टी कॉफी नहीं होना चाहिए. ये आई नो बहुत डिफिकल्ट है बहुत लोगों के लिए जो सुन रहे हैं, लेकिन आप अपना दिन पहले स्टार्ट करो तो आप पहले नॉर्मल वाटर से स्टार्ट करो. पहले पानी पियो, अपना सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करो, क्योंकि आफ्टर जो जितने भी अपने टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हुए, जो बॉडी ने प्यूरिफाई किया रात भर, जो रिकवरी हुआ है, तो यू नीड टू फ्लश इट आउट ऑफ योर सिस्टम. तो सबसे पहले चाय, बेड टी वाला सिस्टम बहुत गलत है. सो इट नीड्स टू बी स्टॉप. एंड यू कैन हैव इट ड्यूरिंग द डे, लेकिन आप जब चाय ले रहे हो तो उसमें आप कुछ हर्ब्स डालो, जैसे अदरक हुआ, मतलब उसको बैलेंस आउट करने के लिए, उसका इलायची हुआ, तो देन इट डजंट बिकम लाइक टॉक्सिक फॉर द सिस्टम. राइट. बट फर्स्ट थिंग, टी, बेड टी हैज टू बी स्टॉप्ड. ये चीज मतलब चलिए ये हम कोशिश करेंगे. डॉक्टर असगर, आई वांट यू टू टॉक अबाउट फास्टिंग, बिकॉज आजकल इतना ये फैट भी हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग, सो पहले होता था कि eat every 2 hours, every 3 hours. अब हो गया है, don't eat for at least 16 hours. What is the significance of fasting as per Ayurveda? Yeah, fasting is very important. Why? Because if you are having a car and if you are running every day, 365 days, what is going to happen? In between, you have to go send the car for service, cleaning and filter change, everything you have to change. You have to stop car for a couple of days. Like that, digestive system is a continuous process, 24 into 365 days. If you every 8 hours, if you put a lot of food into the stomach, and it will be tiring and it is very hard work to digest it. So in between, there will be ama, toxin may be formed because of the wrong combination, fast food, untime food. Before digesting, again we are eating. So these all make the things very messy, and the stomach is checked, and it will be a formation of toxin that in Ayurveda we call ama. Okay. So if the drainage system is blocked, what is going to happen? If you again pour the water and open the tap, it will be flush out, and all the room will be spoiled. So you will close the water connection, disconnect it, and push it and remove the clot or the blockage. Like that, in the stomach, if it is a continuous process without any stop, without a scientific or Ayurvedic proper method of fooding, you will get hearted and you will get a lot of toxins. So for that, to remove that toxins, ama, from your body, you have to go for fasting. And in Ayurveda, it is 2 types. One is therapeutical fasting and one is a common daily fasting. Daily fasting depends upon your convenient body, prakriti, what kind of dosha, like that. The doctor or yourself can go through the book and you will get a lot of tips. Then you can do fasting. In therapeutic aspect, for example, if you long run without looking yourself, you will get diseased. Then a doctor will tell you, first 3 days, no lunch. You go for some medicated buttermilk, something like that. So very minimum food for a couple of days. So body is carving for the food.
then body will search where is the food deposited. When we are out of money, we will search all our shelf and things, getting money like that. So once we use all the deposit or unwanted things or remove it from the body will be more easy to accept all the good things. And then after, if you do the treatment, your body will be more rejuvenated, more disease free. Like that, fasting is very important in therapeutical and in daily life. Thank you. Perfect. So either way, वो जो बोलते थे कि eat every 2 hours, every 3 hours, that's not healthy. Not for everyone. सबकी वो आपके प्रकृति, आपके दोषा के हिसाब से ही आपका वो होना चाहिए डेली का ईटिंग हैबिट्स, आपकी जरूरत के हिसाब से भी. बॉडी आप हेल्दी हो, आप बीमार हो, आप वो आपके हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है. तो ये देयर इज नो ब्लैंकेट रूल. एक रूल किसी के लिए नहीं होता है. जो एक लोग जनरली एक कोई भी फैट को फॉलो करते हैं वो बहुत गलत है. तो बुक से आपको वो समझ में आएगा. एब्सोल्युटली. मैं देख रही थी अब यहाँ पे all the recipes that are here. I want to understand raw food and cooked food. इस पे भी बहुत बोला जाता है कि आप खाना अगर कुक कर लें तो killing a lot of nutrients. And yet to be very honest, हम कितना raw food खाएं. मतलब आप कसम भी खा दोगे अच्छा सैलेड या फल, but it's not sustainable. You can't go on like that. तो इसमें ancient wisdom आयुर्वेदा की क्या कहती है? cooked और raw food का बैलेंस हम कैसे मेंटेन करें? मैं आपको बताती हूँ. एज ए न्यूट्रिशन कंसल्टेंट मेरे प्रैक्टिस में मैं देती थी रॉ फूड, मतलब सैलेड्स देती थी अपने क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को, एंड वो बोलते थे हमें सूट नहीं कर रहा, हमें ये हो कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये होता था. आई यूज्ड टू वंडर कि ये तो हेल्दी है, इतना अच्छा है, क्यों नहीं हो रहा है. जब फिर मैंने आयुर्वेदा सीखा तो मुझे समझ में आया क्यों. तो इसमें क्या है, सबके प्रकृति के हिसाब से होता है. अगर कोई वाता दोषा का पर्सन होगा तो उसका डाइजेशन बड़ा इरेक्टिक होता है. तो आप क्या, मतलब हम लोग बोलते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट, लेकिन आयुर्वेदा बोलता है यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट एंड एसिमिलेट. तो आप खाली खा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या डाइजेस्ट कर पाते हो. तो जो रॉ फूड है वो हैवी होता है डाइजेस्ट करने के लिए. तो अगर आपका डाइजेशन वीक है तो आप नहीं कर पाओगे. लेकिन अगर आप उसको स्टीम करते हैं या सौते करके लेते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स एसिमिलेट होंगे. तो सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस नहीं होते कुकिंग में. आप कैसे कुक करते हो उस पर भी डिपेंड करता है. तो प्रोसेसिंग ऑफ फूड भी आयुर्वेदा बहुत उसको स्पेसिफाई करता है कि आपको फूड कैसे प्रोसेस करना चाहिए. तो ये जो ब्लैंकेट अप्रोच है कि सबको ही रॉ फूड खाओ वो बहुत हेल्दी है, इट डजंट वर्क. It doesn't work. It is not, this book has a lot of recipes. Dr. Asghar, another thing that these days is a villain, and probably rightly so, is sugar. Although बेचारे लोग sugar free या शक्कर या उस सब में जा रहे हैं, but what would you say? Is it easy and is it advisable to completely cut out sugar from our diet? No, it is in Ayurveda there is a saying, Jagatya Vanaushada. Everything in the world is a medicine. Even poison is a medicine. If it is in the proper samskara, proper kind of processing is there, it is a medicine. And the body, our human body is made up of Panch Mahabhut, which is made up of our entire universe. So homogeneity, similarity is there. That is why Ayurveda advising food also medicine, herbs also medicine. And also we took herbs as a whole. Like we took it everything and making the medicine and take it. So there is a samskara, processing is there. When the food is processing, a lot of things has to apply there. A common man cannot digest everything. So either these kind of books you have to follow to know the basic principles and the protocols and some important tips to make your healthy food. For that, for example, Pippali, Piper longum, that will be very pungent, like Kadu rasa. But after post-digestion, it is a Madhura rasa. Even though when you touch in the tongue, it is a different, when it is going to the stomach, it is Madhura. And the combinations and how long you are preparing, processing. So a lot of common simple principles are there. Everyone should know. And then if you follow these kind of things, you will get the health, disease-free world. So sugar is also it's artificial thing. In natural medicine, naturopathy, they are telling it's a white poison. So it is not good to have every day, every time like that. But you can replace with some other things and some kind of grandmother's choice you can take like that. So you cannot say no to anything. You have to very
cautious and you have to have some kind of basic information, then you will be very choosy, like you will get a very proper healthy food. Absolutely. So balance, moderation are the two key things that Ayurveda. Yeah. So अच्छा एक जो एक और चीज जो मैं पूछना चाहूंगी, water. Everybody says drink a lot of water, drink water for your skin. सुबह उठ के पानी पियो. कुछ कहते हैं नहीं बहुत पानी भी मत पियो, खाने के बाद मत पियो. तो किस टेम्परेचर पे कितना पानी, इस पे आयुर्वेदा क्या कहता है? तो पानी के लिए एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी, जो लोग खाने के साथ बहुत पानी पीते हैं वो गलत है. क्योंकि हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो डाइल्यूट हो जाते हैं. तो थोड़ा सिप्स ऑफ वाटर में पानी पीना इज ओके. आप खा रहे हो, आपको बीच में थोड़ा सा, आपका फूड ड्राई भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सिप्स में लेना ठीक है. लेकिन वो जो 1-2 लीटर पी लेते हैं वो पानी नहीं. और सुबह उठ के जो हाइड्रेशन है, क्योंकि बॉडी क्या होती है रात भर की स्लीप से डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो सुबह उठ के पानी पीना बहुत जरूरी है. और अगर आपको सपोज किसी को वेट लॉस वगैरह के लिए करना है, तो वो मैं जैसे जनरली उनको सजेस्ट करती हूँ कि आप 15 मिनट पहले थोड़ा सा गर्म पानी पियो, तो आपके जो सटाइटी लेवल है वो थोड़ी सी आपको होगी. लेकिन खाने के साथ पानी पीना और तुरंत पीना और बहुत सारा पीना वो एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है. और आप दिन के टाइम, आयुर्वेदा कहता है जो अपना 10 to 6 o'clock का जो टाइमिंग है वो भी सही है. आप पानी उस टाइम पे अपना मैक्सिमम कंजम्पशन रखिए पानी का. और हाइड्रेशन उस पर भी डिपेंड करता है आपका एक्टिविटी कैसा है, आप कितना धूप में जा रहे हो, कितना स्वेट कर रहे हो. तो किसी के लिए एक खाली ये बोलना कि इतना ही पानी पियो, वो जैसे बोला जाता है कि 8 liters of water and all of that, that is not for everyone. नहीं, लेकिन सुबह उठ के पानी पीना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी. राइट. चलो वो तो मैं करती हूँ. Okay, now finally, जो चीज I have understood हमारी इस conversation से is that moderation, the fact that you have to be very careful because you're putting something inside your body. तो वो आप जैसे डॉक्टर ने बोला cautiously लें और moderation में लें. But and सबके लिए एक ही prescription नहीं है. यहाँ पे हर individual की अलग requirements. But for those who are listening, who are watching this video right now, अगर हम एक healthy lifestyle की तरफ जाना चाहते हैं, weight loss करना चाहते हैं, कुछ basic चीजें जो हर कोई कर सकता है, it's not very person specific. Any habits that we can inculcate? I would want both of you to tell me, starting with you, Dr. Asghar. For what's the purpose? I couldn't get 100%. Like, so for well-being, for weight loss, any good habits that we can all start doing every day? Yeah, actually you have to follow the nature. Human being, all the persons who is working in the daytime, sleeping the night, because 100 years back there is no electricity, there is now nights are like a day. So what happens, people will not sleep on proper time. The simple basic principle you violate, it is going to be make ill health. Especially Bombay people all sleeping at 3 o'clock, 4 o'clock in the morning and they wake up at 10, 12 o'clock in the morning. Wrong. So better when the time for sunset, you have to eat. You don't go to kitchen for preparing the food. Before that, you have to prepare the food. Just after sunset, whatever your puja or prayer finish, have food. 7:30, if you finish your dinner, like 2 hours, 2.5 hours to digest it. 10 o'clock, you have to go to bed. You have to sleep for 8 hours and wake up at 6 o'clock or little bit early. Depends upon the dosha. Vata person can sleep more, Kapha person don't sleep that much. So tampering these kind of natural rules will, if you violate, you will automatically go into ill health. And you should eat one, like if you took your stomach 3 parts, 1/3 parts you can have food, 1 part with water. Rest you have to keep it empty to make enough space to digest it. What is going on now? Eating till you vomit like that. And sleeping in the wrong time. So these kind of very simple natural rules we are not following. Earlier days, daytime they are going to the paddy field or forest and collect the food and the material, and they are very tired. And just after, once the sunset is over, there is no light, automatically they will go to sleep and morning wake up and they are so healthy and no issues. We are
against our mother nature, mother earth. So the mother earth is angry. That is why pandemic is coming. You spoiling the paddy field, you spoiling the air, you are putting bomb, you are making concrete buildings, concrete forest, polluting everywhere. So natural ecosystem is disturbed. Right. And the mother earth is angry. So these kind of things. In Ayurveda, Janapado Damsaniyam, in Charaka Samhita, there is a very big chapter about how to deal with your mother nature, how to deal with your daily regimen, things like that. If you follow it, you don't need any vaccine. Right. No right. corona, like that. Thank you. You know, I mean, of course, we've moved away from Mother Nature, but also technology is what is bringing us closer. So there also we have to strike a balance and understand where science is helping us and it isn't. Dr. Sonal, आप बताइए क्या कर सकते हैं कुछ habits जो हमें follow करनी चाहिए? एक तो when you eat when you're hungry, first point. Second, eat mindfully. और अपना फूड को अच्छे से च्यू करें. हम लोग गैजेट्स देखते हुए, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए खाते हैं, वो बहुत गलत है. तो आप जब खा रहे हो, आपका ध्यान आपके खाने पे, उसके स्वाद पे होना चाहिए. एंड माइंडफुली कि वो आपको नरिश करने वाला है, वो फूड आप बनने वाले हो. तो वो स्टेप का एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए. तो आप किस तरह से खाते हो, उससे भी बहुत आपके बॉडी पे उसका असर आता है. तो ये चीज हम कर सकते हैं. और एक और चीज हमें ट्राई करना चाहिए कि हम जब भी खाए तो हमारे पांचों जो 6 रस है, जो स्वीट, सार, सॉल्टी, मतलब स्पाइसी, बिटर, एस्ट्रिंजेंट, ये हमारे प्लेट में रहना चाहिए. मतलब हमारी वो इट विल मेक अ कंप्लीट मील फॉर अस. जैसे हम लोग न्यूट्रिशन साइंस में बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, तो आयुर्वेदा में बोलते हैं षड्रस. तो वो 6 टेस्ट वो आपकी प्लेट में होना चाहिए एक मील में. तो वो आपको आपके तीनों दोषास को बैलेंस करेगा. राइट. और आप अपने दोषा के हिसाब से खाए तो आप मतलब, और सुबह उठ के पानी पीना वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट है. और जैसे सर ने बोला कि आप टाइम से सोए, स्लीप इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पिलर, एंड एक्सरसाइज. और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, जैसे अभी कोविड टाइम है तो मैं बोलूंगी नसिया करके एक थेरेपी है, तो इसमें नाक में हम 2-2 बूंद तेल डालते हैं. वो बहुत अच्छा है अगर हम एक इसको अपने डेली रेजिम में इंक्लूड करें, क्योंकि वो हमारे म्यूकस जो मेम्ब्रेन है उसको कोट करता है, एंड इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम लॉट ऑफ इन्फेक्शंस. तो नाक में 2-2 बूंद तेल डाले, कान में थोड़ा सा उस ऑयल को लेके रब करें. तो ये सोने से पहले या एनी टाइम? सुबह उठ के करें. जैसे आप नहाने से पहले कर सकते हैं. नारियल का तेल, नारियल का तेल हुआ या तिल का तेल भी. तिल का तेल जैसे तीनों दोषास के लिए अच्छा रहता है, तो तिल का तेल अच्छा है. या कितने जन मस्टर्ड ऑयल भी डालते हैं, तो वो भी ठीक है अगर आप टॉलरेट कर पाते हैं तो, क्योंकि बहुत मस्टर्ड ऑयल बहुत पंजेंट होता है इसलिए. तो तिल का तेल सही रहता है. और अगर घर का घी हो तो वो भी ठीक है. तो कान में लगाना, नाक में डालना, ये आप अपने दिनचर्या रूटीन डेली रेजिम में आप जरूर से ये इंक्लूड करें. और एक्टिव रहे और टाइम से सोए, हेल्दी खाए, और प्रोसेस फूड जितना ज्यादा से ज्यादा हो कम करे. डॉक्टर, डेयरी अलाउड है क्या आयुर्वेदा में? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स? डेयरी इज अलाउड. डेयरी मतलब उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया है. आज का प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमें अच्छा डेयरी मिल नहीं रहा है. तो वो सब एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स वगैरह से वो काउज का रहता है. तो अगर आपको पता है आपका सोर्स, आप अच्छी जगह से सोर्स कर सकते हैं, तो आई एम लाइक प्रो डेयरी. आई एम नॉट अमंग दोज जो बोलते हैं कि नहीं डेयरी नहीं खाना लेना चाहिए. बट यू हैव टू नो ऑर्गेनिक हो, आपका सोर्स प्रॉपर होना चाहिए. then dairy is good for you. And if you, unless until you're lactose intolerant, right, वो एक अलग कंडीशन हो जाता है. right. सुपर. सो सबने तो अपने हेल्थ कस्में खाई कि 1 जनवरी से शुरू करेंगे. अब आप फरवरी से ही शुरू कर दें. आई थिंक दिस इज गुड इनफ, एंड दिस कन्वर्सेशन is a great start to push you in that direction. Thank you so much, Dr. Asghar and Dr. Sonal. This book, The Ayurvedic Kitchen, is something that you must buy. Order it online or go to a bookshop and order it. Westland has published it. And thank you so much, doctors, for sharing your wisdom with us. Thank you all. Thank you. Thanks for your time. Thank you so much.